Morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? No? Am I audible? Yes, yes. Okay. In case no questions, so we'll continue. So I think Harsh, I think we were discussing these terms. So asset, current asset, fixed asset, liability, current liability, long-term liability, debtor, creditor. Then we have drawings. Drawings क्या होता है? When owner withdraw funds for personal use. ये important है because if the funds are withdrawn for official purpose, business purpose, then these are not called as drawing. But if it's withdrawn by for the personal use, it's called as drawings. Okay. What is capital? It's total amount invested in the business. कैपिटल का ब्रेकअप कहाँ से आता है? What is equity? हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. ओनर्स फंड होता है ये. और what is debt? ये borrowed funds होता है. Now, when you form a company, so let's suppose ABC Limited, or ABC Limited, let's assume A is an owner, B is owner, and C is owner. So when you form this legal entity called ABC Limited, and A, B, C are the owners in this company, so A and ABC Limited are two different legal entities. Accounting principle है, आगे आएगा. Economic entity principle करके बोलते हैं इसको. So what it means that, for example, Mukesh Ambani and Reliance, okay, even though he holds the majority investment and everything, he is the prime or the major owner, but doesn't mean that he is equivalent to Reliance. So these are two legal entities, okay, from law perspective. So what happens? So if ABC Limited, if ABC has invested some amount in ABC Limited, so that investment is called as equity, but it's treated as liability for ABC Limited, because जब company wind up होगी, तो ABC Limited को वो पैसा वापस करना है ABC को, partners को या owners को. That's why it's treated as liability.
और डेट तो लाइबिलिटी है ही. Is this part clear? That equity and debt are liability and hence recorded in the liability section of the balance sheet. Any doubt in this? Is this clear why equity is recorded as liability? Okay. Because equity and debt put together makes capital, and because equity and debt itself is recorded as liability, that's the reason the capital is also recorded as liability. What are the contents of equity? Owner's fund, The owner's capital, whatever retained belongs earning, anything? whatever belongs to owners forms a part of equity. To retain earning, yes. Then we can say that retained earning is our liability. Of course, it is. अगर आज ABC Limited ने 100 रुपए कमाए हैं, if ABC Limited has earned 100 rupees, which is in form of, let's say, PAT, okay, and out of this, let's assume 20 you have declared as dividend, so that goes out, correct? So there's no more within the company, but the 80 becomes your retained earning, RE लिखा है. Now this forms a part of equity. Why it forms part of equity? Because this entire 100 rupees belongs to owners. आपने सब कुछ पेमेंट कर दिया है. Every liability, tax, and everything you've paid off, and there's no preference shares. So which means this 100, the entire 100 belongs to the owners. जिसमें से आपने 20 रुपीज ही उनको दिया है, 80 रुपीज रख लिया है कि मैं फ्यूचर एक्सपेंशन करूंगा. तो अगर फ्यूचर में हम एक्सपैंड नहीं करते या कुछ उस कंपनी बंद हो जाती है एक्सपेंशन करने से पहले, तो ये पैसा किसको बिलोंग करता है? दिस 80 रुपीज व्हिच इज रिटेन अर्निंग of course belongs to shareholders and has to be distributed to them in case you decide not to expand or something happens on something like wind up of the company happens before you expand or spend that money. So yes, retained earning also becomes liabilities. Why? Because it's a part of an equity. And you discuss that equity is a liability. Any question on this? यहाँ तक कुछ पूछना? ठीक है. Then stock. या इन्वेंट्री. ठीक है. So different names से आपको मिल सकता है, but it's simply means unsold goods. So let's say if you produce 100 units and you are able to sell 80 units, so जो 20 units बच गया है at the end of that period, could be a quarter, could be a month, could be week, could be year, depending upon आप किस period पे calculation करते हैं. So whatever is your unsold quantity of your goods at a given point of time, for that given point of time, that becomes a stock inventory. And it is carried forward in the next period, and then it becomes a part of an opening stock kind of a concept. So previous year का जो closing stock है वो carry forward हो जाता है next year या next period में as an opening stock. And this is your asset. आप ओन करते हैं ना इन्वेंट्री को. आप मतलब आपकी कंपनी ओन करती है. So inventory, stock, whichever name you use, it's an asset. Then purchase. Now what do you mean purchases? Suppose
I'm into business of Inventory is a saleable good, saleable good basically, yeah. and cost of goods sold is equal to inventory. Cost of goods sold is equivalent to inventory. Inventory are recorded as at cost, not at the selling price. No, that's okay. It cannot be. So, for example, if you're We can say that COGS is without adding any thing into the inventory. जिस पे इन्वेंट्री जिस वैल्यू पे इन्वेंट्री खड़ी है उसी वैल्यू पे हम कॉक्स रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में. नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं ना, इन्वेंट्री और कॉग्स अलग अलग चीजें. कॉग्स है जितने का माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी. इन्वेंट्री है जो माल नहीं बिका. ओवरलैप कॉन्सेप्ट है बट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है. दीपक, इज दिस क्लियर? What means cost it, because if I'm saying that inventory is there in the stock, now I want to sell it. What cost it adds to make the difference between it? Yes. देखो, सपोज मेरी 100 रुपीज की 100 यूनिट्स है, या मान लो 100 यूनिट्स हैं और इनकी कॉस्ट 1 रुपी लेके चलते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के. सो मेरी टोटल 100 यूनिट्स की वैल्यू भी 100 हो गई फ्रॉम ए कॉस्ट पर्सपेक्टिव, करेक्ट. अब मैंने इसमें से 80 रुपए का माल बेच दिया, मैंने सेल कर दिया 80 रुपए का, 80 यूनिट को सेल कर दिया. तो अब आपके लिए जो कॉस्ट है, कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो 80 है. कि भी 80 का माल बेचा तो उसकी कॉस्टिंग बताओगे ना आप. जो इन्वेंट्री बच गई है आपके पास, वो तो 20 यूनिट इन्वेंट्री बची. इसको भी सेल होना किया है जो उसकी कॉग्स में जोड़ दोगे. नहीं, I'm not saying that I'll add to the COGS. You said ना कि COGS is equal, so जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जिस वैल्यू पे है P&L में वो COGS दिखेगा. नहीं, what differentiation it has in the terms of cost, not in the terms of placement where it has been placed. नहीं, तो वही मैंने कहा, डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए ओवरलैप कॉन्सेप्ट है ये. सो बोथ जो COGS है वो भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है, विच इज 1 रुपी इन दिस एग्जाम्पल, एंड जो इन्वेंट्री है वो भी 1 रुपी ही पे ही रिकॉर्ड होगा. But COGS is not equivalent to inventory. Both will be recorded at the same cost. वो overlap है. Because in the case when we were discussing that one of the turnover ratios, at that time it was, my question was that it was told that COGS and inventory there is a difference, and the difference is the indirect cost to convert this inventory into a saleable thing. Correct. So that is the difference, or we can go ahead with this. वो भी difference है. Recorded it. वो भी difference है. वो भी difference है. अगर मैं लेट्स अज्यूम मेरी अभी इन्वेंट्री 20 यूनिट बची हुई है, ठीक है, अभी अगले साल चली गई और ये बिकी नहीं है अभी तक, ठीक है. अब लेट्स अज्यूम आप मेरे कस्टमर, आप मेरे पास आते हो, मैं आपको इन्वेंट्री दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ, आप कहते हैं नहीं मेरे को नहीं खरीदना. मैंने कहा प्लीज दीपक खरीद लो, बिकॉज आई वांट टू पुश दिस, करेक्ट. आई वुड ट्राई एंड सेल दिस टू यू. सो आई विल से खरीद लो. मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको जो आपके गोडाउन में डिलीवरी करा दूंगा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है आई विल बियर दैट. तो आई वांट टू पुश दिस सेल बिकॉज ये लास्ट 10 यूनिट से 20 यूनिट्स बच गए हैं और ये मुझे अपने वेयर हाउस को खाली करना है. सो आई विल से
आइडियली मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेयर नहीं करता हूँ, कस्टमर करता है। ये जो मैंने 80 यूनिट्स बेचे हैं, जो फर्स्ट 80 यूनिट्स बेचे थे, उसमें जिसने भी जो भी कस्टमर ने मेरी शॉप से खरीदा, उसके बाद उसका हेडेक है, उसकी कॉस्ट है जो उसको अपने फैक्ट्री अपने गोडाउन तक लेके जाना है। बट ये 20 यूनिट्स मेरे नहीं बिक रहे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, या लेट्स से आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, आई वांट टू जस्ट क्लोज दिस ऑफ, आई वांट create more space in my warehouse for the new lot that's coming in. So इसमें मैंने कहा कि ठीक है दीपक, I will deliver the products to your shop and I will bear the cost. Let's say I incur another 10 rupees on this entire 20 rupees. तो वो दो मेरी बुक्स में इन्वेंट्री 20 रुपए पे रिकॉर्ड हुई हुई होगी, बट उस गुड्स को सेल करने के लिए मैंने 10 रुपए और खर्चा कर दिया। तो वो सिचुएशन में यस, फिर वो डिफरेंस एक और ऐड हो जाएगा बिटवीन इन्वेंट्री एंड कॉस्ट, जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में डिस्कस किया है। But that will be under separate heads. It will it's in outbound freight. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, हाँ Indirect cost है, and it will not be a part of COGS. It will be recorded separately about. करेक्ट Or we have to add that back in COGS. नहीं, it will be recorded separately, you're right, but what I'm trying to explain to you कि अगर मैं separately रिकॉर्ड करने के बाद, देखो सेपरेटली तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग बोलते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो कॉस्ट से मत रिकॉर्ड कर लो, खत्म हो। अब मैं कंपनी के लिए मैनेजमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ, भैया वो इन्वेंट्री को बेचने के लिए मैंने कितना खर्चा किया, क्या मैंने उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए 20 रुपए खर्चा किया? नहीं, मैंने वो इन्वेंट्री जो मेरी बुक्स में 20 रुपए की प्राइस पर थी, उसको 20 रुपए की कॉस्टिंग पे थी, उसको सेल करने के लिए मैंने 30 रुपए खर्चा किया। सो फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव आई विल रिकॉर्ड इट सेपरेटली, ठीक है, बट फ्रॉम मैनेजमेंट एनालिसिस पर्सपेक्टिव आई वुड कंसिडर दैट एज ए कॉस्ट कि भैया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसमें ये 10 रुपए रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जो शायद मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू सेल दिस इन्वेंट्री, क्योंकि ये सेल नहीं हो रही थी। अगर आप पीएनएल पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो यस, देयर इज नो डाउट, ये सेपरेट रिकॉर्ड होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहीं पे जाके। And whenever we have to calculate that inventory turnover ratio, we have to see where it is. Any cost associated to convert inventory into sellable, to sell it to the client, we have to add back that. So yeah, so what we do, if that amount is recurring and that amount is substantial, तो हम ऐड करते हैं। बट लेट्स अज्यूम 5 साल में आपने कभी छोटा मोटा कोई कस्टमर को एज ए जेस्चर या बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप कभी कर दिया, तो उसको फिर इतना क्रिएट नहीं करने की। बट इफ फॉर एग्जांपल मेरे 100 कस्टमर है और 100 कस्टमर आई नो कस्टमर ए एंड कस्टमर ने ए से मेरा पुराना रिलेशनशिप है, तो उसको मैं डिलीवरी चार्ज फ्री कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम दैट। बट और किसी कस्टमर को नहीं करता तो मैं एड बैक नहीं करूंगा, though the small amount might see in the P&L as under indirect expense. But if I'm seeing every year or every quarter, whatever period we're looking at, हमें recurring amount दिखती है, that amount has become a part of my BAU business model. So of course I will add back, though in an accounting system it will not be part of the that cost because it's an indirect expense. And that's why as a management you will understand, correct, कि यार ये 20 रुपए की इन्वेंट्री को बेचने में मेरा खर्चा कितना हो रहा है। 20 रुपए नहीं हो रहा, 20 रुपए से ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इन्वेंट्री जब एंड ऑफ द ईयर में बच जाती है तो बिकती मुश्किल से। मैं एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल इन दिस कार सेगमेंट। जैसे लेट्स अज्यूम मारुति का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो मारुति ने 2020 में कोई कार बनाई, कि उसके मॉडल पे जब वो कार मैन्युफैक्चर होती है एज पर लॉ आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। सो वो कार 2020 में बनी, अब ईयर एंड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, at the end we're in the last month of the year, correct, ठीक है। this year is different because इस year में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा because मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, ठीक है। थिंक ऑफ विदाउट पेंडेमिक सिनेरियोस। सो मारुति ने कार्स बनाई 2020 में, बना रहा 100 यूनिट बना दी, 80 बिक गई, 20 यूनिट खड़ी है, और वो 20 यूनिट के जो इंजन है, ठीक है, उस पर 2020 का मेक आ गया है। तो 2021 में अगर चले गए हम लोग, कस्टमर ये गाड़ी नहीं खरीदेगा आसानी से। क्यों? अगर कस्टमर कहेगा कि यार मेरे को 10 लाख रुपए प्राइस है
तो मैं 10 लाख रुपए में मैं जब 2021 में जनवरी में खरीद रहा हूँ या फेब में खरीद रहा हूँ, मुझे 2021 का मॉडल दो आप. Why should I pay 10 lakh same price for 2020 make? Why should I do that? वो सिर्फ जो इग्नोरेंट कस्टमर होगा ना, जिसको चीजें समझ में नहीं आती, वो बेवकूफ बन जाएगा, उसको डीलर ही चिपका देता है गाड़ी. ठीक है, जो जनरली फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं या मोर सोफिस्टिकेटेड नहीं होते इतने, उनको ये चूना लग जाता है. But somebody who goes into the shop and start having conversations like this, उसको समझ आता है डीलर को कि बस ये somebody who have been dealing into the cars for some time. तो आप डीलर को अगर वो गाड़ी निकालनी है तो उसको डिस्काउंट पे लेके आना पड़ता है. तो वो डिस्काउंट पे जब लेके आता है, कभी कभी डिस्काउंट पे लेके आता है, कभी कभी डिस्काउंट पे नहीं लेके आता, बिकॉज उनकी प्राइसिंग जो होती है उसको तोड़ते नहीं है. वो क्या करता है, कहता है मैं कार में चलो 50,000 की एक्सेसरी लगा के देता हूँ आपको. वो भी तो कॉस्ट है ना उसकी. तो वो सब रिकॉर्ड करनी पड़ती है. एग्री, इट विल शो एज इनडायरेक्ट, बट एज अ मैनेजमेंट अगर मारुति को समझना है कि बस मेरे को कितना खर्चा करा उस इन्वेंट्री को निकालने के लिए, तो ऑफकोर्स ऐड करना चाहिए. सेम गोज विद, अगर आपने देखा स्वीट शॉप पे अगर आप जाओगे, some of the big sweet shop like Haldiram and sweet chain like this, some of these sweets जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, डे होती है, तो क्या होता है, अगर आप उस स्वीट शॉप उस स्वीट शॉप में जाओगे और उस पर्टिकुलर स्वीट की प्राइसिंग देखोगे, तो आपने देखा होगा कुछ शॉप्स में 9 PM या 8 PM 10 PM डिपेंडिंग अपॉन क्या किस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं. ठीक है, उसका प्राइस चेंज हो जाता है, बिकॉज उनको पता है कि अब रात शॉप बंद होने वाली है, रात का लास्ट 1 आवर बचा है, सॉरी शॉप क्लोजिंग से पहले 1 आवर बचा है या 2 आवर बचा है, तो ये इन्वेंट्री अगर कल की डेट पे चली गई तो ये बेकार हो जाएगी. सो अब हम मॉर्निंग में जब फ्रेश थी, हम 80 रुपीज पर केजी बेच रहे थे, तो दे ब्रिंग इट डाउन टू 60 रुपीज और 20 रुपीज, वट एवर प्राइस. समटाइम दे स्टार्ट सेलिंग दैट एट द सेम प्राइस, बट फ्री में कुछ और देना शुरू करते हैं उसके साथ कि ठीक है आपको ये मिलेगा. सो वो सब कॉस्ट ही है ना इन्वेंट्री को बेचने की. Yes, yes. But जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने जाएंगे, we have to search for that indirect cost associated with it. Yeah. And if it is not directly means because P&L में वो मेंशन करेंगे नहीं करेंगे, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को फिर अगेन वी हैव टू गो इनटू दैट. दैट्स इट. या वो एफर्ट है, करेक्ट. ये तो वैल्यू ऐड होती है फॉरेंसिक एनालिसिस की. इसीलिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, ये सॉफ्टवेयर भी ना रेशियो कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि उन्हें करना ही होता है. P&L उनके पास होता है, बैलेंस शीट उनके पास होती है, सॉफ्टवेयर में फॉर्मूले डिफाइन होते हैं, अकाउंटिंग फॉर्मूले, सॉफ्टवेयर भी रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं. जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर सॉफ्टवेयर से मोस्ट ऑफ द टाइम अलग आता है, बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक दिस. क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर में तो एक फॉर्मूला फिट है कि जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट है उसको उठाओ और रेशियो कैलकुलेट करो, तो वो तो एल्गोरिथम को फॉलो करेगा, बाय डिफॉल्ट वो रेशियो निकालते हैं. बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, वी विल सी अगर जैसे P&L में इनडायरेक्ट कॉस्ट दिख रही है हमें, जो हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वेंट्री को पुश करने के लिए, तो उसकी प्राइसिंग को हम अलग करते हैं, सॉरी उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं. Yes. Any other doubt? No, that is okay. Anybody else? Okay. Sorry, हाँ परचेजेस पे थे. So if you're into business of, let's assume, manufacturing shirts, and you purchase either manufacturing or trading of shirts, whichever way. So either you purchase shirts or either you purchase raw material, only those are recorded as purchases. If you purchase, let's assume, machinery, you purchase machine, this machine is not
your business, correct? Selling of machine is not your business. Or let's assume you purchase furniture for your office. ठीक है, ये भी आपका business नहीं है. So these are not recorded under purchase head. So though from an English perspective, these are still used as purchase when you say that I purchased this machine or furniture, but from an accounting perspective, these are not recorded in the head called purchase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परचेज का मतलब क्या? परचेज का मतलब है जिस चीज का आपका बिजनेस है, या तो वो चीज खरीद रहे हो या उसका रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, then only it's recorded in the accounting head called purchase. If you're purchasing anything else which is like machine जिससे आप शर्ट बनाओगे, या फर्नीचर which is for your interior of your office, so those are not recorded under head called purchase. Is that clear? Any doubt in this? Same applies for sales. Same logic. If you're selling those shirts, then only you will record under heading called sales. If you're selling your old machinery or old furniture, though from an English perspective, you still will be using the word sale, that you've sold this, but you will not be recording under accounting head of sales. Okay. Then you have purchase return and your sales return. ठीक है, simple है. कुछ purchase किया था आपने, that you purchase some shirt but it is found defective or whatever, doesn't meet those agreed criteria, so you're returning it back. That's called as purchase return. Similarly, you have sold some product and your customer is returning back because of whatever reason, that's called as sales return. And your net sales, and then you have net purchases. So that's the difference between purchases and net purchases. So net purchases is purchases minus purchase return. Similarly, net sale is sales minus sales return. ठीक है. फ्री दो तरह के होते हैं, परचेजेस और सेल्स. क्रेडिट होता है, एक होता है कैश. कैश इज सिंपल, दैट आई हैव परचेज समथिंग और आई हैव सोल्ड समथिंग एंड इमीडिएटली एक्सचेंज में कैश आ गया या दे दिया. Credit is, for example, when I'm doing a credit sale, I've sold the goods, but cash has not come into the business. What comes in? A promise comes in, a promise by the customer that he will pay after some time. So whenever there is a credit sale, this creates debtor, which is nothing but an asset जो हमने discuss कर दिया. And whenever there is a credit purchase, it creates creditor. जो हमने discuss किया liability. हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? सर ये क्रेडिट सेल में डेटर तो समझ में आ गया, एसेट कैसे बन जाएगा? ये तो कल ही बताया था ना कि डेटर्स एसेट होते हैं. ओके सर, ओके.
डेटर जो डूब जाते हैं, पैसा नहीं देते, उनको बैड डेट बोलते हैं. एंड बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन मेक आउट डेटर्स व्हिच हैज बिकम बैड. व्हाई दे हैव बिकम बैड? बिकॉज़ दे विल नॉट पे मनी और आई कांट रिकवर द मनी फ्रॉम देम. दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज बैड डेट. One point in this, the bad debts, so for example, they are not paying for 1 year. Now we'll restate those assets in from current asset to this non-current assets. Now, from audit point of view, what you think means is the key? कब तक वो दिखा सकते हैं इसको? After that, they have to do the write-off, the form of bad debts, because otherwise, so they will show infinitely कि these debts are there and assets are available to them. देखो, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग काउंटी स्टैंडर्ड्स में अलग अलग प्रोविजंस है. सो द मोस्ट स्ट्रिंजेंट वन इज द बैंकिंग सेक्टर. सो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए नॉर्म्स आते हैं, इसमें 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज की कैटेगराइजेशन में वो डिफाइन करता है फ्रॉम एन law, Indian law perspective. In some of the markets like Singapore, UK, US, वहाँ पे काफी डिफरेंट है. ठीक है, वहाँ पे बेसिल नॉर्म्स वहाँ पे पूरे फुल इम्प्लीमेंट कर दिए गए. इंडिया इज स्टिल, सो without getting too much of those advanced international concepts, but what is the current position in India, especially into sectors like banking or some of the NBFC जो RBI के through lending वगैरह करते हैं, कि वहाँ पे वो डिफाइंड नॉर्म्स है. 90 डेज तक पेमेंट नहीं आया तो क्या कैटेगराइजेशन होगा, 90 डेज के 180 डेज में नहीं आया तो क्या होगा, 360 डेज में नहीं आया तो क्या होगा, उसके बाद नहीं आया तो क्या होगा. ठीक है. व्हेन वी आर लुकिंग एट द अदर सेक्टर्स, वहां पे ठीक है, नाउ जिसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की हम बात करते हैं, वहां पे आपके पास दोनों, आपको एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी. तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको सालों तक चलाते रहोगे तो आपको हिट नहीं लगेगा. अगर आप सालों तक चला रहे हो तो आपको कॉस्ट भरनी पड़ती है उसकी. तो यू नीड टू डिसाइड आप किस वे में जाना चाहते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू प्ले अराउंड दिस. बिकॉज आप एक चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करोगे, जैसे अपनी बैलेंस शीट को बड़ा दिखाना चाह रहे हो, तो आपको टैक्स भी भरना पड़ रहा है उसमें, क्योंकि आप जैसे उसको बैड डेट रिकॉर्ड करते हो, वो आपके प्रॉफिट में जाके लॉस हिट करता है और आप उस पर टैक्स बचा लेते हो. ठीक है. सो इफ यू वांट टू शो योर बैलेंस शीट एज बिग एंड कंटिन्यू टू शो दोज एज डेटर्स, इवन दो आपको पता है वो पे नहीं करने वाले, ठीक है, तो टेक्निकली यू आर बर्निंग योर फिंगर्स. ठीक है, बिकॉज आप अननेसेसरी जो टैक्स बचा सकते हो वो आप नहीं बचा रहे हो. ठीक है, बदले में आना कुछ नहीं है. सो इट डजंट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस टू डू दिस. हाँ, अगर आप फ्रॉड करना चाह रहे हो, हाँ, अननेसेसरी that कंपनी is के बैलेंस शीट को साइज को बड़ा दिखाना चाहते हो, दिखाते जाओ एंड फॉर दैट यू आर पेइंग अ टैक्स, तो ठीक है, वो तो फिर आपकी चॉइस है. अगर आप करना चाहते हो वो कर सकते हो. बट somebody from an audit perspective will come and start challenging कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो you should have justified reason to tell your auditors कि हाँ ये 10 साल से आया नहीं है, और क्यों नहीं आया है, और वो कंपनी बंद हो चुकी है, तब भी तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया बैड डेट में. then you will have very difficult time to convince the auditors. हेलो सर. हाँ जी. सर, ये डिस्पोजल ऑफ एसेट कब होता है? डिस्पोजल ऑफ एसेट, हम्म. डिस्पोजल ऑफ एसेट बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज होते हैं. सो ये सिंपल सिनेरियो जो भी मैंने डिस्पोजल ऑफ एसेट यानी कहाँ से तुम ले आए, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट अगर अभी डिस्कस करना है, सो डिस्पोजल ऑफ एसेट से फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन परचेज करी है एंड लेट्स से वो मशीनरी
कि लाइफ 5 साल और 5 साल यूज हो गए तो अब मैं उस एसेट को डिस्पोज करता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पोजल ऑफ एसेट। कुछ वो तो फिर टर्मिनेशन हो गया। क्यों टर्मिनेशन? किसने कहा टर्मिनेशन? मैं डिस्पोज कर रहा हूँ, टर्मिनेशन क्यों? टर्मिनेशन एक और चीज टर्म है सर, याद नहीं आ रहा है, उसका भी वैल्यू निकाला जाता है। देख लेना, बता देना मुझे क्या टर्म है जो आपको याद नहीं आ रहा, उसको पूछना है तो। बट डिस्पोजल ऑफ एसेट, लेट्स अज्यूम और सिंपल एग्जाम्पल ले लो, मान लो मशीनरी की लाइफ 5 साल है, मैं 2 साल के बाद एसेट को बेच देता हूँ, मुझे वो मशीन जब यूज नहीं करनी, मुझे नहीं खरीदनी है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो डिस्पोजल ऑफ एसेट है ना। बट डिस्पोज कर रहा हूँ एसेट को, सेल कर रहा हूँ एसेट को, सिंपली सी उसको डिस्पोजल बोल रखा है। सो आई एम नॉट श्योर आपने कहाँ से पिक किया ये, बिकॉज अभी तक हम यहाँ पहुंचे तो है नहीं। तो उस मशीनरी का तो फिर टर्मिनल वैल्यू निकाला जाएगा ना। मैं क्यों निकालूंगा टर्मिनल वैल्यू? जो खरीद रहा है वो निकाले, मैं क्यों कि निकालूंगा? जो कंपनी जो सेल कर रहा है वो निकालेगा। निकालेगा वैल्यूएशन में डिस्कस करेंगे। हाँ। तो हम यहाँ पर टर्मिनल के यहाँ पर हम डिस्पोजल यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? ये टर्मिनल जो मशीनरी जो इसका जो एक्सपॉइल हो गया, उसकी जो लाइफ है खत्म हो गई, तो वहां पर डिस्पोजल ऑफ एसेट कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा फैजूर, आप कहाँ पे यूज करने की बात कर रहे हो? किसी में मशीनरी का लाइफ 5 इयर्स है, 5 इयर्स है, डिप्रिसिएशन चार्ज करते गया, और उसके बाद 5 इयर्स के बाद हम डिस्पोजल ऑफ एसेट कर सकते हैं उसको। हाँ कह सकते हैं। तो फिर सर ये टर्मिनल वैल्यू फिर टर्मिनल वैल्यू से कैसे आपको लिंक्ड हो पता है गया? टर्मिनल वैल्यू? पता है टर्मिनल वैल्यू? मैंने नहीं कहा लिंक हो गया, आप लिंक कर रहे हो। आपको पता है टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? हाँ सर, जब फिक्स्ड एसेट ये लाइफ खत्म हो जाता है, उसका एक वैल्यू निकाला जाता है, टर्मिनल वैल्यू कंपनी निकालती है। क्यों निकालूंगा जब लाइफ खत्म होगी तो? सेल करने पर। अरे टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? जब कंपनी का जो ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है, हम्म। तब वो टर्मिनल वैल्यू निकाला जाता है। इसका एसेट से क्या लेना देना? सर तो एसेट ही तो, अगर प्रोडक्शन देगा ही नहीं वो, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो कंपनी का ग्रोथ तो कांस्टेंट हो गया ना। फजलूर देखो, जब कंपनी का पहले आपने बोला कंपनी की ग्रोथ 10% है, तो टर्मिनल हम्म वैल्यू निकालते हैं। ग्रोथ 10% का मतलब क्या? कंपनी की लाइफ खत्म हो गई कि लाइफ बाकी है? लाइफ बाकी है सुनो, बट। हाँ रुको यहीं पे। अब एक मशीनरी है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो उसकी ग्रोथ 10% है कि ग्रोथ 0% है? पहले कंपनी क्या करती थी, पहले कंपनी क्या थी कि फजलूर फजलूर यस फजलूर, मैं तो यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करो पहले। तो आप गलत ट्रैक पे पहुंच गए, वापस लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप उसका आंसर करो, फिर उसके बाद जो डाउट है वो पूछना। तो वो जो मशीन की लाइफ खत्म हो गई, पहले ग्रोथ 10% थी, अब ग्रोथ 10% रहेगी कि 0% हो जाएगी? 10% ही रहेगी। 10% ही रहेगी। मशीन की लाइफ खत्म हो गई तब भी उसकी ग्रोथ 10% रहेगी? नहीं सर, कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी कि जीरो हो जाएगी? अगर मशीनरी परचेज, अगर दूसरी मशीनरी परचेज नहीं करते तब जीरो हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू बाद में डिस्कस करेंगे लेवल 2 में। आई थिंक आप टर्मिनल वैल्यू को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेके बैठे हो, सो वैल्यूएशन में वैसे भी डिस्कस नहीं कर रहा, लेवल 2 में डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन। और क्या डाउट है इसमें?
एनीथिंग एल्स? ठीक है। ठीक है, देन एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने आपको बता रखा है पहले। ठीक है, सो विल नॉट डू दिस अगेन। सिमिलरली रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सो एक बार ऊपर से देख लेते हैं। एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, इक्विटी, डेट, inventory, purchases, return, retained earnings, sales return, net sale, credit sale, cash purchase, credit purchase, debtor, bad debt, expenses, revenue. ठीक है, so last time any doubt in any of these terms before we move further? चलिए, in case no, now in terms of जो डेबिट और क्रेडिट की हम कल बात कर रहे थे, उसके जो रूल्स है, ठीक है, so जो कल व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, वो जो कल आप लिख पा रहे थे ये वाले, ठीक है, या तो अगर आपको वो यूज करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज सो अदरवाइज आई जनरली यूज दिस वन। सो अगर इंक्रीज इन एसेट है, ठीक है, सो ये डेबिट, ठीक है। सिमिलरली फिर अगर डिक्रीज इन एसेट है तो इसके रिवर्स हो जाएंगे। अगर इंक्रीज इन एसेट डेबिट है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। सिमिलरली डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट हो जाए। ठीक है, ये अगर आप नोट करना है तो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल यूज। ये सेम है जो ऊपर व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो याद किया हुआ है तो उससे कर लीजिए। ये कंफर्टेबल लगता है ये कर लीजिए, whichever works good for you। एंड देन इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके सॉरी, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डेबिट होते हैं। एंड लॉस इज आल्सो काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। और आपके जो रेवेन्यू या इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं।
तो ये दो रूल याद रखना है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। Now, in terms of journal entry का जो फॉर्मेट होता है, so अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज में इसमें देख लीजिए, कुछ मिस तो नहीं हुआ। So we discuss sales. Overhead is nothing but expenses. ठीक है, and sales minus expenses gives you profit. Value, financial value, asset we have discussed, liability we have discussed, debt we have discussed, equity we have discussed. ठीक है, इक्विटी में एक फॉर्मूला, तो जैसे फॉर एग्जांपल एसेट, मैंने एक होम परचेज किया, लेट्स अज्यूम 50 लाख रुपीस का, उससे मैंने अपने फंड्स डाले विच बिकम लेट्स अज्यूम 20 लाख, मैंने बैंक से लोन लिया विच इज डेट 30 लाख। मैंने जो होम खरीदा 50 लाख का, वो मेरे नाम पर रजिस्टर है, so that becomes my asset. 20 rupees becomes my equity and 30 rupees becomes liability. So the equation है वो होती है asset is equal to equity plus liability, which means आप कोई भी चीज खरीदते हो, anything that you own, उसका पैसा कहाँ से आया, या तो आपका खुद का पैसा होगा या आपने किसी से बोरो किया हो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो आप देखो वो डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज asset minus equity is equal to liability. So I will not go into all form of combination, वो आप किसी भी तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं, but asset is equal to equity plus liability is what remains the base. उसका लॉजिक मैंने आपको बताया, anything that you purchase, anything that you own, ये जो फंडिंग है, या तो आप अपनी पॉकेट से लाओगे, किसी और से लोगे, यही दो सोर्सेज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई एसेट इज इक्वल टू खुद का फंड प्लस बोरोड फंड्स। एनी डाउट इन दिस इक्वेशन जो मैंने ऑरेंज में हाईलाइट करी? ठीक है, थैंक यू, नो क्वेश्चन। सो एक्सपेंडिचर की हमने बात किया, तो एक्सपेंडिचर में another category called as capital expenditure. Capital expenditure is the expenditure which gives you benefit in more than 1 year. ठीक है, एक्सपेंडिचर जिसका जो बेनिफिट है
वो आपको फॉर अ पीरियड ऑफ बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इंडिया में अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यू परचेज मशीनरी. वो मशीनरी का जो बेनिफिट है, if the life of the machine is let's say 10 years, तो मशीनरी का जो बेनिफिट है आपको उस अकाउंटिंग ईयर्स के आगे भी आता रहेगा. So those are called as capital expenditure because that expenditure has created an asset and that asset will give you a benefit for more than a year. That's why उसको capital expenditure की तरह रिकॉर्ड किया जाता है. Any question on the capital expenditure? Then coming to accounting principles, so first is going concern principle. Going concern principles, as per going concern principle, it makes an assumption that the company will continue for an indefinite period of time. What it means कि हम जो accounting statements बनाते हैं, financial statements बनाते हैं, we don't assume the life of the company is 2 years, 3 years, ऐसे नहीं बनाते. We assume the company will continue for an indefinite period of time, and then basis that assumption you prepare your books of accounts. वो assumption कहाँ से आती है? वो assumption इस principle से आती है, which is going concern principle. Any questions? Next is accrual concept. So accrual concept, the income and the expenditures are recorded in the period, in the accounting period in which they relate. So what it means, for example, you paid rent in advance. So in 2019, you have paid an advance rent for 2020. ठीक है, तो 2019 में आपने पैसा दिया 2020 का rent. Now the question is, should you record in your books of account in 2019 or 2020? As per accrual concept, you should record that in 2020 because वो जो expenditure है वो 2020 के rent का है. It relates to 2020. It does not relate to 2019. Though the payment is done in 2019. So as per accrual concept, you should record these expenses or income in the period to which they belong, not in the period in which the cash is received or the paid. इसका दूसरा जो जो कॉन्ट्ररी थॉट होता है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, कैश बेसिस. कैश बेसिस का रिवर्स है. वो क्या बोलता है कि उस पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस पीरियड में पैसा आया या गया है, नॉट इन द पीरियड इन विच दे रिलेट टू. सो इफ यू फॉलो अ कैश बेसिस प्रिंसिपल, in the same example, the rent will be recorded in the year 2019, though it belongs to 2020, because we're following a cash basis, and the cash basis says जब पे किया है रिसीव किया उस पीरियड में रिकॉर्ड करो. So ये दो प्रिंसिपल है, accrual concept and cash basis. Accrual is what you need to follow from an accounting standards perspective, but मैंने theoretically आपको cash basis बता दी just for your understanding what companies follow the accrual concept. Any doubt in first two? So, sir, companies following cash basis. Accrual basis. Okay. Only in the preparation of cash flow statement the company follows the cash basis. Otherwise, for the preparation of the P&L and the balance sheet, you follow accrual concept. Okay. The next is monetary unit. I think we've discussed this. Only those transactions are recorded which can be quantified in monetary terms, and hence those are called as financial transaction. Any transaction which you cannot express or measure or you quantify in a monetary value, वो record नहीं करी जाती, and वो counting process का part भी नहीं बनती.
Next is economic entity. Economic entity we've discussed. Economic entity is the same what it says that the owner and the company. Okay, these are two different legal economic entities. वो दोनों को अलग अलग देखा जाता है law perspective से. Though you are the sole owner of the company, but it's not same. These are considered as separate legal entities. जो हमने example discuss किया ABC Limited and A and B and C वो तीन owners हैं. तो ये चार legal entity है. One is ABC Limited, one is A, one is B, then C. That's economic entity. Periodic concept. हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी. Going concern principle says the company will continue for an indefinite period of time. Theoretically, मुझे अपने बुक्स ऑफ एन अकाउंट कब बनाना चाहिए? जब मैं बुक्स तब बनाते हैं जब हम क्लोजिंग करते हैं. क्लोजिंग कब करते हैं? हम कंपनी बंद करते हैं. तो यानी टेक्निकली मुझे कंपनी के असेसमेंट तब करना चाहिए जब मैं कंपनी वाइंड अप कर रहा हूँ. बट हम तो कोई कंपनी वाइंड अप करने नहीं वाले, because we are looking at the going concern principle. Hence another principle comes in which is periodic concept. Periodic concept बोलते हैं आप एक डिफाइंड periodicity पे अपने असेसमेंट, अपनी परफॉर्मेंस को रीअसेस करो, so that you and your shareholders and your owners or other stakeholders, government, society, suppliers, bankers, whoever your stakeholders, comes to know what is happening or what was your performance in that defined period. उसको periodic concept बोलते हैं. इंडिया में for a listed company this periodicity minimum is quarter. यानी अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको क्वार्टरली अपना रिजल्ट जो है कंप्यूट करके पब्लिश करना पड़ेगा. कॉस्ट कंसेप्ट. ठीक है. कॉस्ट कंसेप्ट सेज योर एसेट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस, नॉट एट द सेलेबल वैल्यू. ठीक है. सो फजलूर यही रीजन है जो जब हम मशीनरी सेल करते हैं हमें टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, बाहर को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है जो हम वैल्यूएशन में करेंगे. बट अगर आपको पता है टर्मिनल वैल्यू क्या होता है तो वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ये एक प्रिंसिपल एड्रेस करेगा उसको, नहीं तो वैल्यूएशन पिक करेंगे. सो जब मैं कोई चीज रिकॉर्ड करता हूँ अपनी बुक्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड खरीदी, ठीक है, तो मैंने लैंड 10 लाख रुपए की खरीदी बट उसकी मार्केट में आज की वैल्यू 10 करोड़ है. ठीक है. सो मेरी बुक्स में 10 लाख ही रहेगी, 10 करोड़ नहीं रहेगी, because I will record at the cost not but at the market में जो जिस वैल्यू पे रियलाइज मींस मार्केट वैल्यू. Dual effect. This principle says every accounting entry will have dual effect. दो इफेक्ट क्रिएट होंगे. वो दो इफेक्ट क्या होते हैं अभी सीखेंगे हम लोग. But every entry will have two impacts. Any doubt? Okay. हिस्टोरिक कॉस्ट हमने कर लिया, इकोनॉमिक एंटिटी हमने कर लिया, पीरियोडिसिटी कर लिया, मनी मेजरमेंट हमने कर लिया. मटेरियलिटी. दिस प्रिंसिपल सेज कि आपको वही इवेंट्स और वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने चाहिए जो मटेरियल हो. Some of these items which are non-material, you can club those into one category, sundry expenses करके और उसमें रिकॉर्ड कर दो. ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी. Your accounting statement should have defined objective. It should be prepared by an independent person. It should be unbiased. ठीक है. ऐसे नहीं कि आप, that's why the concept of auditors comes in. The auditors are unbiased because they're not the holder, they're not the owners of the company, they're not the investors, so they're not biased. So that's the objectivity is the basic premise basis which the concept of the auditing comes in. Next is understandable. आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऐसे बनाना चाहिए किसी को समझ आ सके. There's no point of preparing a statement like that किसी को समझ ही नहीं आ सकते, because then you're trying to fool your stakeholders कि हमने बना तो दिए but किसी को समझ ही नहीं आ. And to address again this, most of the laws in most of the countries have defined a prescribed format, prescribed
टेम्पलेट, वो सब क्यों करते हैं? सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ जाए, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टाइल से अगर प्रेजेंट करेंगे तो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. So that's why most of the countries have defined the standards, and the standard defines, so one of those provisions on those standards is the format, is the template. Accounting statement should be reliable, should be relevant and comparable. Any questions so far? ठीक है, so in case no questions, ये मैंने आपको बता दिया. Asset is equal to liability plus equity, which is nothing but owner's fund. So any question on this? Andy, any questions? Hello, am I audible? Yes, audible. Okay. So yes, example, अगर you want to look at it, so just for illustration purpose, so company के fixed assets 70 rupees है, current assets 50 rupees है, current liability 30 rupees है, long term liability 10 rupees है. So you need to calculate equity, and जो formula है वो है asset. So जो formula हमने discuss किया वो asset is equal to liability plus equity है, ठीक है. So assets में the 70 rupees will come in assets, this will come under assets. Current liability यहाँ पे डाल देते हैं, long term liability यहाँ डाल देते हैं. 70 plus 50, 120 rupees, minus 40 rupees, 120 minus 40 gives you equity of 80 rupees. Okay. Any questions on this? ठीक है. In case no, so this completes my principles and terminologies. ये ethics वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है. The expectation is you follow ethics, but in principle, in reality, some of these cases, in case you're aware, in case not, and if you're interested, you can read about these cases. Certain cases हैं, a couple of more cases enron हैं ये. आप cases अगर corporate governance, ethics, window dressing, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, you want to build your expertise into these, or at least want to get exposure of these, so you should read at least some of these case studies. More than happy अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है डिस्कस करने में. These are nothing to do with accounting principles जो हम follow कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, but it's more depending upon आपका अगर इंटरेस्ट उन segments में है या उस एरिया में, तो more than happy to discuss any of these once you read these. Now, bookkeeping, accounting or reporting. So
accounting is preparation of a financial statements, and then reporting is the next part of it. It requires most of the countries, as per the law, are required to report certain things to certain stakeholders. उसको reporting बोलते हैं कि आपने, for example, simplicity के लिए आपने अपना P&L बना लिया, बट P&L बनाने के बाद आपको किसी को बताना जरूरी है, which means income tax authority, shareholders, and so on. That is called as reporting. You also have to report that piece. So, वो again is not part of a financial वो company secretaries का rules होता है कि वो कैसे report करना है, कहाँ report करना है, क्या requirement. But just in case what this slide is, the purpose of this slide is to explain you the difference between accounting and the reporting piece. ये हमने डिस्कस कर लिया. The accounting starts from कि वो फाइनेंशियल इवेंट है कि नहीं है, which is if an event is financial transaction, yes or no. अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्लासिफाई नहीं होगा, क्लासिफाई नहीं है तो समराइज नहीं होगा, समराइज नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, तो रिपोर्टिंग नहीं होगा. बट अगर फाइनेंशियल इवेंट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करेगा. All the companies under ROC, they have to file this accounting and all. Not filing this, to maintain this part. Yeah. LLPs are also under ROC. Yeah. At least those which are registered. Non-registered की तो कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू मतलब लीगल पर्सपेक्टिव से कोई वैल्यू नहीं. The law doesn't recognize them. LLPs are recognized under ROC? Not under ROC. So ROC is only for the companies. So ROC means कि company, the entity which is registered under a status called as companies है. So LLPs होते हैं, LLPs जो रजिस्टर होती हैं, ठीक है, वो उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, बट उनको लीगल स्टेटस अंडर सेपरेट कैटेगरी मिलता है, which is LLPs. So they are also liable to adhere these means the Companies Acts के ऊपर no, not applicable. But certain accounting हाँ, correct. Companies Act के only few accounting provision and income tax के most of the provisions becomes applicable to LLP. Not all provisions of Companies Act becomes applicable to LLP. इसे हम रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं दीपक, अनरजिस्टर्ड की कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं, बिकॉज अनरजिस्टर्ड तो कोई भी कुछ भी कैसे भी करता है. Just thought that came to my mind that what happens to this LLPs and all. ये फेयर पॉइंट है. मैं I understand what I'm saying कि हम जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड वाले की बात है. सपोज मैंने कल एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में अपने घर में, किसी को कुछ बताया नहीं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं, तो किसी को नहीं पता लगेगा. सो आई एम सेइंग प्रैक्टिकलिटी में ऐसे ही बिजनेसेस चल रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो उनका कभी पता नहीं लग सकता. हाँ, अगर जैसे मैंने एक फर्म खोली है और जाके लॉ में रजिस्टर कर दी दीपक एंड निशांत, अब उसमें आई एम बाउंडेड टू डू सर्टेन थिंग्स जो हम डिस्कस कर, बिकॉज बहुत छोटी चलती हैं जो अनरजिस्टर्ड होती हैं, वो सब ये नहीं कर रहे हैं, एंड द लॉ हार्डली कैन कैच देम. ठीक है. Because some of the LLPs are too bigger than some of the big corporates. Correct. Yeah, वो सब रजिस्टर हो जाती हैं फिर. Accounting, bookkeeping. So accounting is the process of preparing accounts. How do you manage those books? अब तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डाइल्यूट हो गया. बुककीपिंग पहले ज्यादा रिलेवेंट था, जब फिजिकल पेपर्स मेंटेन करने पड़ते थे. ये जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक साल में अगर आप सब कुछ फिजिकल है, सारे सेल्स, इनवॉइसेस, परचेज, सब फिजिकल पेपर्स हैं, उनको रखना कितना मैसिव जॉब होता होगा. हर पेपर को, हर उसको तो एक तरीके से संभाल के रखा जाता था. फिर लेकिन कंपनी 10 साल से एग्जिस्ट करे तो हर साल का ऐसे डॉक्यूमेंट होगा, तो वहां पे काफी कंपल्सन होता था.
And but अभी तो सब soft copy, सब software में move कर गया, so it's more of a digital data storage issue now. But from that perspective, the bookkeeping concept है बहुत dilute हो गया. Now it's more of how do you manage your data in a digital space rather than a physical space. ये देख लीजिए, हमने एक डिस्कस कर लिया है प्राइमरी, विच इज सो फाइनेंशियल प्रोसेस क्या है. पहले आप चेक करते फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं. अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो यू डोंट गिव अ डैम केयर, बिकॉज एज पर दिस थ्योरी इट डजंट फॉलो अ प्रोसेस. अगर हाँ तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, उसको समराइज करते हो, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है, आप क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है, and then once you do this analysis, then you finally communicate, which is nothing but reporting of those results to your shareholders or to the respective stakeholder. So broadly वो process जो मैंने पहले बताया था, accounting is nothing but recording, classification, summarization, and then interpretation analysis, and the last piece is the reporting. उसी को different form में आपको explain किया. So this. ठीक है, चलिए. सो इतना करते हैं. विल नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे. विल स्टार्ट डेबिट क्रेडिट कैसे होता है जर्नल एंट्री के. मैं आपको एग्जांपल्स करूंगा. बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड, प्लीज कल और आज में हम a very basic foundation for us to go into those next pieces of the accounting. So my request for those who come from a non-accounting or commerce background, please itna revise kar lijiyega, so that you at least have some foundation around this. Okay. Another one thing I want to check, examiner told me to check with you. You still want to keep this 2-day, or are you okay to add another day? Because now ये तो optional sessions है, correct? Anyways, we're not doing a new topic in this, so she told me to check with you. Are you okay to add another day? Could be a Friday, or could be whatever day, and that helps you to speed up this. And anyways, it's an optional, because we're doing the back what has been done, so it should not be an issue अगर कोई एक दो का किसी का miss भी हो रहा है. So I'm just putting a thought. Any specific views? Can we add Friday as well? जो भी हमारा I think Wednesday Thursday है, उसमें Friday same time same slot. Is that okay? Okay, but after that, this next week after 12th. 12th, the next week. And also we can increase the time duration. Same day, it can possible. हाँ, अगर आप लोग को work करते तो I can increase that. I can start at 7:30 also, if that works with you. Okay, 7:30 is okay, but not beyond 9:30, because 9:30 से possible नहीं है sir, because मैं इससे ज़्यादा extend आपके लिए नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा. So that's no question. That option doesn't exist. ठीक है, whatever exists is preponement, nothing on the postponement side. So don't worry about this. हाँ जी. So 7:30, is that okay? Okay, sir. yes. ठीक है. So then it means 7:30 to 9:30 and becomes Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Okay. And but I do request after 13th, means after the next Sunday. हाँ ठीक है. but time increase का भी next week बोल रहे हो, या time increase मैं यहाँ से करवा दूँ 9th से? I mean, that's okay. Time increase is okay, but extension of 11th.
can be done from 16, 17, 18. Means 16, 17, 18 we can plan for that Friday, inclusion of Friday in that week. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है. I will pass this to Damni and then later. I think Damni will not be there. Whoever is looking in her absence. ठीक है. Sakshi is handle all over the matter right now. No issues, no issues. चलिए, thanks, bye. Okay, so I will close this and we'll continue in the next week as per the revised time. Chaliye, thanks, bye.